Hello, 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 guys. Am I audible? Yes. Okay, wonderful. So, in last session, we discussed the mole valence. Okay, we were talking about the mole valence equation. And there was one question I did ask you. So, have you guys tried that question? Welcome to the part 2 of the formula revision series, Formula Firestorm for GATE 2025 of Chemical Reaction Engineering, guys. Okay, I told you that what we will discuss, and this was the question we were discussing yesterday. I did ask you to try this question. So, how many of you attempted this question? Like if you see here, it is given a feed mixture having, suppose this is the reactor. In the feed, we are having 100 moles of A, 150 moles of B, 50 moles of C, okay, 200 moles of B and 150 moles of C. Okay, okay, okay. And 50 moles of R. And in the product, they were asking about the molar composition. Okay, conversion of A was given 40%.
So if we talk about the product, so first let's see how many products will be there. So as we can see, 100 A conversion of A is not 100%. So obviously some unreacted A could be there. Some unreacted B is possible. Some C will be there definitely because it is a product. D could be there because it is a product. As you can see, the reaction was 2A plus 3B gives 4C plus D. Okay. So in this series, in this reaction, A, B, C, D are participating, but in the feed, R is also given. So what is R? क्या मैंने गलत लिख दिया? No. R is present in the feed, but it is not participating in the reaction. So that means the R is acting like an inert. The amount of R in feed and inert and in outlet will remain same. Correct? तो हमें इनके moles निकालने हैं. Okay, so we can think like this: 100. This is initial moles of A, Na naught. Initial moles of B, 200. Initial moles of C, 150, and R, initial moles of R. कैसे निकालना है? देखो बहुत इजी है, आपको ज्यादा कुछ करने की नीड नहीं है. Just do one thing. Make a table. In first column, write all the components. In second column, moles of components at Xa equal to 0 means initial moles, Ni naught. So where A is 100, B is 200, C is 150, D is not given, so it will be 0, and R is 50. So you can see, है ना? So good evening, guys. Very, very good evening. So what will be Na? So here you can put the values. Na is 100 multiplied by 1 minus 0.4. So that will be 60 moles. Correct? In the same way, you can calculate Nb. That is Nb naught minus B by A times of Na naught into Xa. So here you can put the values. So Nb naught is 200. B upon A means their stoichiometric coefficients, ratio of stoichiometric coefficient 3 upon 2 into Na naught 100 into Xa 0.4. So you can see it will be 40, 20, 60, 140. Correct? Same way you can calculate for C. That is Nc naught plus C upon A times of Na naught into Xa. Put the values and solve. Nc naught is 150. C upon A will be 4 by 2. As you can see the reaction. Na naught is 100. Xa is 0.4. तो यहाँ से आपका Nc आ जाएगा 20, 40. 40 into 280 plus 150. 230. Okay. Same way you can calculate for D. Nd will be equal to Nd naught plus D by A times of Na naught into Xa. So that will be 0 plus D by A is 1 by 2 into 100 into 0.4. तो आपका 20 आ जाएगा. And NR will remain same since it is the inert. So here if they ask, see the total moles of the product mixture will be, you can add all these values: 140, 200, 200 and 230, 430, 430 and 70, 500. So total moles are conserved in this case. What is the mole percentage they are asking? You know, molar composition means mole percentage of each and every component. So you know how to calculate that: moles of component divided by total moles into 100. Okay, so you can calculate like this. For A, it will be
12%. For B, it will be 28%. For C, it will be 46%. For D, it will be 4%. And for inerts, it will be, that is R, 10%. See, this is the answer. That's how you can calculate. So I hope this is clear to everyone. If any one of you have something, so you can discuss in live chat, or you later on, if anyone is watching the recording, so you can ask in the Telegram group. The link of my Telegram channel you can find in the description of the video. That is Gate with Ace. ओके, तो आगे बढ़ते अब हम बात करेंगे मोल बैलेंस हो गया, रिलेटिव रेट्स हो गए. नाउ द रेट ऑफ रिएक्शन. हाउ कैन वी डिफाइन द रेट ऑफ रिएक्शन? बेसिकली द रिएक्शन काइनेटिक्स. So to define the rate of reaction, you should know one thing first: the factors affecting the rate of reaction. So we know that for homogeneous reaction system, rate of reaction is a function of temperature as well as concentration. Okay, this is a, you know that the factors affecting the rate of reaction, temperature, concentration only. Okay, some in some books they mention pressure also, but uski need nahi hai, because you know that for gaseous reaction, concentration itself contains pressure terms. Okay, so we don't need to mention that separately. So based on these two here, find a mathematical relation. You know, we use the Powers law, and as per the Powers law, you guys know that the rate of reaction will be K times of product summation of Ci power alpha. This is the Powers law. I hope it is clear. ठीक है, अब इसका मीनिंग क्या है ये समझते हैं. So here, as per the Powers law, we have R is equal to K product summation Ci power alpha. So you should know that here K is the reaction rate constant, which is a temperature dependent term. Alpha I and Ci. Ci is the concentration of reactant participating in the reaction. Okay, or you can say concentration of reactant I participating in reaction, and alpha I is the apparent order of reactant I. ओके, अब वो होता क्या है वो आपको पता है ऑलरेडी. ठीक है, apparent order is order of reaction, you guys know. Order of reaction is the sum of concentration, sum of powers of concentration term in the rate equation. What is rate equation? See, any mathematical relation between these three variables R, K and C. Any mathematical relation between rate of reaction, rate constant K and concentration is known as rate equation. Okay, this is also known as rate law, also known as rate expression. You guys know that already. Okay, तो यहाँ पे होता क्या है, कैसे लिखते हैं, ये सब आपको पता होगा. अगर in case anyone has any doubt, so again I am repeating. See, suppose I hope you guys know the meaning of normal summation. ठीक है, अगर मैं लिखता हूँ normal summation, let's say Ci. So what is the meaning? So you know that it means C1 plus C2 plus C3 and so on. Okay. Similarly, if I write
product summation Ci. So it means C1 into C2 into C3 into so on. That is the meaning. तो यहाँ पे Ci power alpha. So suppose we have a reaction something like A plus B gives something. So the rate equation for this reaction will be K product summation of Ci. So two reactants are there. So Ca power alpha A multiplied by Cb power alpha B. That's how we will write. Okay. Similarly here, suppose if we have three reactants, P plus Q plus R gives something. So here rate expression will be K concentration of P power alpha, alpha P or alpha you can say concentration of Q power beta, concentration of R power gamma. Whatever notation you like, you can use instead of alpha. If you like, you can write alpha 1, alpha 2, alpha 3, alpha A, alpha B, alpha C or alpha beta gamma, whatever. Okay? So these are the apparent orders. Alpha is the apparent order of P, beta is the apparent order of Q, gamma is the apparent order of R. अरे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पढ़ा होगा ना आप लोगों ने sum of powers or you can say exponents of concentration terms in rate equation. तो in general अगर हमारी कोई rate equation है suppose like this तो यहाँ पे order of reaction हो जाएगा n equal to summation of alpha I. I hope you understand that. And what is the meaning of order of reaction? That also you know. R versus Ca का अगर आप कोई ग्राफ ड्रॉ करते हो suppose you can check. Suppose we have some rate equation like this R equal to K Ca power n. Now if you draw a graph between rate of reaction versus concentration of A, so you can see if n is equal to 0, R equal to K, the curve will be something like this, independent of concentration. If order is 1, so you know R equal to KCA, it will be linear. If order is 2, so you know it will be something parabolic and so on. है ना? So here you can see order n क्या बता रहा है? N is telling us, N is informing us that how this concentration will affect the rate of reaction. मतलब if order is 0, like here if you see, if order is 0, so whatever changes you do in concentration doesn't matter, rate will remain constant with respect to concentration. है ना? If order is 1, so you can see that if concentration varies, the R will also vary linearly. If order is 2, so you can see concentration varies, so R will varies with the power 2 of that Ca. So this is the significance of order of reaction. It signifies the how the concentration affects the rate of reaction. So this is overall order of reaction, जो हमें combined effect बताता है. But if you are having a reaction in which multiple reactants are there, like this A, B, or P, Q, R, or something, so apparent orders signifies the same, but for individual reactant. And overall order is for overall effect, combined effect of all the concentrations. Good evening, guys. So I hope it is clear to you. है ना? That is the significance of order of reaction. ये आपने पढ़ा होगा. अगर नहीं, अगर किसी को डाउट है या कुछ है तो don't worry. When we will have rank improvement series or the quick revision sessions, there we can discuss in proper details. Otherwise, you can see we have already discussed that in our classes. ठीक है? तो this is how we write the rate of reaction. अब इसमें एक और चीज है जो आपको पता होनी चाहिए. वो क्या? तो rate of reaction है. Suppose we have a reaction A plus B gives C. Suppose. So here, as per the Power's law, rate expression will be something like this: KCA power alpha CB power beta. Correct? Now, you should understand this term on right hand side represents जो right hand side वाला part है. ये क्या signify करता है? This right hand side part signifies
the disappearance of reactant, or you can say formation of product. Okay, disappearance of reactant or you can say formation of product. तो क्या मीनिंग है, क्या कहना चाह रहा हूं मैं, समझते हैं. सपोज इफ द आर इज गिवन, रिलेटिव रेट्स याद होंगे आपको, माइनस आर ए अपॉन ए इक्वल टू माइनस आर बी अपॉन बी इक्वल टू आर सी अपॉन सी इक्वल टू आर, है ना. तो ये रेट ऑफ रिएक्शन दिया. नाउ इफ यू वांट टू राइट द रेट एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ माइनस आर ए और माइनस आर बी or in terms of RC, suppose. What will be the meaning and how will you write? तो यहाँ पे एक चीज आपको जो क्लियर होनी चाहिए वो ये है कि रेट ऑफ फॉर्मेशन of any species I, we generally consider equal to rate of disappearance of species R. ऐसा हम मान के चलते हैं. जैसे आपने हीट ट्रांसफर में पढ़ा होगा, बॉइलिंग कंडेंसेशन या थर्मोडायनेमिक्स या फिर एनर्जी बैलेंस पीसी में, saturated liquid, saturated vapor. When you are going from liquid to vapor, it is latent heat of vaporization. But when you are coming from vapor to liquid, it is latent heat of condensation. So magnitude wise, both are same, but direction wise, they are opposite. So what we write? We write latent heat of vaporization equal to minus of latent heat of condensation. है ना? Same way here. Rate of formation is equal to rate of minus of rate of disappearance. Minus of rate of disappearance. Okay. मैं इसे सही से कर देता हूँ. Now it's better. तो यहाँ पे अब देखते हैं. This right hand side part represents the disappearance of reactant and formation of product. So here you see, I am interested to write the rate in terms of disappearance of A. Minus RA means rate in terms of disappearance of A. This is also represents the disappearance of A because A is the reactant. So it will be same. We are on the same page. We will write something like this as it is. Similarly for B, it is represents disappearance of reactant. B is the reactant, and we are also interested to write the rate in terms of disappearance. So it will be 𝐾𝐶A alpha CB beta. It represents that formation of product. C is the product, you can see, and we are also interested to write rate in terms of formation of C. So it will be 𝐾𝐶A power alpha CB power beta. आप बोलोगे तो सर मैं पता है इसमें नया क्या है, मैं कहूँगा कोई बात नहीं, बताया तो अच्छी बात है. अब नया देखते हैं. Suppose if they ask you to write rate in terms of form A, formation of A, or the rate in terms of disappearance of C. अगर ऐसा पूछते हैं तो क्या लिखोगे? How will you write? Simple. See this. This is representing disappearance of reactant. What is a reactant? But we are interested to write rate of reaction in terms of formation of A. Formation of A, we want to write in terms of formation of A. But this is disappearance of A. So opposite होगा, it will be minus 𝐾𝐶A power alpha CB power beta. Okay. In the same way, this represents formation of product. C is the product, but I am interested to write in terms of disappearance of C. So formation, disappearance, opposite, तो minus. समझ रहे हो ना आप लोग? That's what we are going to do. That's how we are going to write the things. ठीक है. तो अब अगर ये समझ में आया तो यहाँ पे आप मुझे बताओ, सपोज अगर मेरे पास कोई रिएक्शन है, लेट्स से A gives B, B gives C, and I want to write rate in terms of disappearance of A and formation of B and formation of C. तो क्या होगा? इस स्टेप के लिए रेट कांस्टेंट K1 और इस सेकंड स्टेप के लिए रेट कांस्टेंट K2 मान सकते हो. अपरेंट ऑर्डर्स ये सब आप 1 ले लेना, कोई दिक्कत नहीं है. ऑल ऑर्डर्स आर 1 सपोज. तो कैसे लिखो? यस, ओके, वंडरफुल.
So how will you write? See this. The A is the reactant. I am interested to write rate in terms of disappearance of A. This is the reactant. I am interested to write disappearance. तो वो हो जाएगा प्लस का K1 CA because it represents disappearance of reactant. ठीक है. अब C की बात करें. C is the product because whatever is on the right hand side of arrow, that is the product. है ना? So I am interested to write rate in terms of formation of product. This also represents the formation of product. So rate constant here K2. And what is the reactant for this step? B. B is the reactant. So it will be K2CB. Correct. क्या बात है engineer? बहुत बढ़िया. है ना? So this is what how we will write. But for B, now it is the point to see. You are interested to write rate in terms of formation of B. And B is the product in first step. So this represents formation of product. And we are also writing in terms of formation. So positive K1, rate constant, and concentration of reactant in first step A, C. Now, whenever you should know, whenever a component is participating in more than one reaction steps, whenever a component is participating in more than one reaction steps in a same reaction mechanism, I hope you understand. है ना? So in the same reaction mechanism, if a component is participating in more than one steps, so what we do, we add all these rates. ठीक है, ऐड करके लिखते जाते हैं. तो ऐड करके लिखेंगे. So second part, for the second step, you know, B is acting like a reactant. B is acting like a reactant, and this represents disappearance of reactant. But I am interested in formation of B. तो opposite हो गए, तो minus K2. What is the reactant here? B, CB. तो ये बन गया आपका K1CA minus K2CB. Okay, so that's how we write the rate equations. Correct. ठीक है. So I hope it is clear to all of you. See, we invested more time on this because reaction mechanism is the only thing in CRE which is most important. If you know how to write the rate expressions, then you are good to go. उसके बाद तो सिर्फ mathematics है. 50% problem are solved there only if you know how to write the rate expressions. अब हमारा कोई ऐसा discussion नहीं होगा. Now we will just do the questions. So I hope all these things are clear. है ना? अब आगे बढ़ते हैं. तो आप लोग मुझे बताना. Suppose we have a reaction like 2A plus 3B gives 4C. So this is the problem. So suppose we have a reaction 2A plus 3B gives 4C. And the rate expression R is given as, suppose 12 or 120 CaCb. Suppose. So can you tell me what will be minus Ra, minus Rb, and Rc? This is the question. ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. So very easy. See this. Reaction is given 2A plus 3B gives 4C and rate expression is 120 CaCb. Correct? So you know that from relative rates, minus Ra upon 2 is equal to minus Rb upon 3 is equal to Rc upon 4, and that should be equal to R. Correct? So what is minus Ra here? Minus Ra will be 2 times of R. That means
240 CaCV। वैसे तो इसे अगर आप सही से लिखना चाहते हो तो इसे ऐसे लिखेंगे, 2 times of 120 CaCV, correct? And if you wish, you can also write it as 240 CaCV. Same minus RB if you have to write. So minus RB will be 3 times of R. Ideally, you should write it as 3 times of 120 CaCV. Or if you wish, you can also write it as 360 CaCV. Same RC, 4 times of R. Ideally, it should be 4 times of 120 CaCV. Or you can say 480 CaCV. ठीक है, बट यहाँ पे मैं आपको फिर से क्लियर कर देता हूँ that this is the correct way of writing such expressions. Why? Because rate constant, this 120 is what? You know that 120 is K, and K is the function of temperature only, nothing else. ठीक है, क्योंकि अगर आप माइनस आ रहे ऐसे लिखोगे, माइनस आ रहे इक्वल टू 240 CaCV, so the person can think, or you can think like K equal to 240, K equal to 360, K equal to 480. In the same reaction, how we can have 3 different values of K? Are you understanding my point? So K is always 120 because it is a function of temperature. If you are changing temperature, only then K will change. K will not depend on stoichiometry or anything. In fact, anything cannot depend on stoichiometric coefficient. Why? Can anyone you tell me? Can anything in general, I am asking, be dependent on stoichiometric coefficient? Yes or no? If yes, then why? If no, then why? क्या इस दुनिया में कोई भी चीज, सर आर एन माइनस आर ए समझा दीजिए, हाँ करेंगे उसकी बात। क्या इस दुनिया में कोई भी चीज स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट पे डिपेंड कर सकती है? कुछ भी हो दुनिया में, एनीथिंग, इवन द कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिटिंग और एक्सटेंस रिएक्टेंट, वो भी आपने पढ़ा होगा एनर्जी मास बैलेंस में। क्या कर सकता है डिपेंड? अगर आप लोगों ने मैथ पढ़ी है तो आपको पता होगा डिफरेंशियल कैलकुलेशंस का एक चैप्टर होता है डिफरेंशियल इक्वेशंस का। देयर वी स्टडी 3 टाइप्स ऑफ वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट वेरिएबल्स। बट हमारी केमिकल इंजीनियरिंग, हमारी साइंस में, फिजिक्स में एक और वेरिएबल होता है, फिक्स्ड वेरिएबल। यू नो द डिफरेंस बिटवीन कांस्टेंट्स एंड फिक्स्ड वेरिएबल्स, आई होप। ठीक है, if any one of you don't know, you can ask all these things in live chat or in the comment section. So let's talk about these three only right now: independent, dependent, and constants. So independent variables are those which we can change freely. Can you change the stoichiometric coefficient of any reaction? Tell me. Can you change the stoichiometric coefficient of any chemical reaction? Like अगर मैं आपसे कहूँगा वाटर सिंथेसिस की रिएक्शन लिखो, आप बताओगे जी वो ये होती है। क्या इस रिएक्शन को आप स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स को आप चेंज कर सकते हो एट योर ओन विल? नो, ऑल दीज आर फिक्स इन नेचर, वी कांट चेंज। क्या इसे मैं ऐसे बना सकता हूँ, H2 प्लस 2O2 गिव्स H2O? नहीं बना सकता ना। क्या हम ऐसा बना सकते हैं? नहीं बना सकते, है ना, बिकॉज ऑल द स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स आर कांस्टेंट, दे आर द नेचुरल थिंग्स, नेचर में मिलते हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। नेचर ने बोला है 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन combines with 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन to give 2 मोल अमोनिया, तो this ratio is fixed, you can't change, this proportion is fixed. You cannot do such thing like 1 unit of 1 mole of nitrogen is reacting with 1 mole hydrogen to give 3 moles of ammonia or something, ऐसा आप नहीं कर सकते, है ना। तो कांस्टेंट है, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स आर कांस्टेंट। तो आपको लगता है इफ दे आर कांस्टेंट तो एनीथिंग कैन डिपेंड ऑन देम? डिपेंडेंट वेरिएबल्स पढ़े हैं ना, क्या होते हैं? डिपेंडेंट वेरिएबल्स आर दोज विच चेंजेस इफ यू मेड एनी चेंज इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। पर यहाँ तो कांस्टेंट्स की बात हो रही है ना, कांस्टेंट को तो आप चेंज नहीं कर सकते, तो फिर कैसे डिपेंडेंट हुआ, है ना। तो नथिंग इन दिस यूनिवर्स कैन डिपेंड ऑन stoichiometric coefficients. I hope you understand. That is another question, has nothing to do with this part, but this is another question.
ठीक है, इस एग्जाम्पल से हमारा इस क्वेश्चन का लिंक नहीं था, ये एक अलग ही कॉन्सेप्ट। आई होप इट इज क्लियर। लाइक अगर मैं आपसे बोलूं, क्या किसी सिस्टम में या किसी गैस का प्रेशर या वॉल्यूम या टेम्परेचर आर के साथ चेंज हो सकता है? आर इज अ यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, नथिंग कैन चेंज विद पी वी विद आर, है ना? सेम इन द सेम वे, आपने बोला आर और माइनस आर ए का मीनिंग, देखो आर का मीनिंग होता है रेट ऑफ रिएक्शन एंड माइनस आर ए का मीनिंग होता है रेट ऑफ रिएक्शन और मोलर रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए पर यूनिट वॉल्यूम। ये हमने कल बात की थी, मे बी आपने शायद कल वाला सेशन नहीं देखा, आप देख लेना, उसमें हमने डिस्कशन किया है। और ये पार्ट क्या रिप्रेजेंट करता है? डिसअपियरेंस ऑफ रिएक्टेंट और फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, है ना? तो यहाँ पे देखो, रेट इक्वेशन इज दिस, तो ये हमारा क्या बता रहा है? डिसअपियरेंस ऑफ रिएक्टेंट, माइनस आर ए इज ऑल्सो डिसअपियरेंस इन टर्म्स ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ रिएक्टेंट, तो वी आर ऑन द सेम पेज, तो पॉजिटिव ही रहेगा। क्लियर टू एवरीवन? मतलब आपको क्लियर है ये? द इंजीनियर, क्या नाम रखा है, क्या बात है, द इंजीनियर, यू आर सो प्राउड, आई लाइक इट, वी शुड प्राउड ऑन आवर प्रोफेशन। इज इट क्लियर और नॉट? आई थिंक आप थोड़ा शायद वीडियो लैग चल रही है, बट आप उसे लाइव करके देख लेना, रिफ्रेश कर लेना, सेम पेज पे आ जाएंगे हम लोग। ओके, ओके, तो आगे बढ़ते हैं। अब इसमें एक कॉन्सेप्ट आता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड मॉलिक्युलरिटी के बेसिस पे एलिमेंट्री एंड नॉन एलिमेंट्री रिएक्शन का, वो हम यहाँ डिस्कस नहीं कर रहे हैं क्योंकि उसमें कोई फॉर्मूला वगैरह ऐसा या इक्वेशन नहीं है, तो वो हम क्रैश कोर्स में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हम बात करते हैं आगे बढ़ के रेट कांस्टेंट की, ठीक है? तो I hope you guys know rate constant K is a function of temperature only. Why? The answer of this you will find in solution thermodynamics. ठीक है, जब सॉल्यूशन थर्मो होगा हमारा जो कि चल रहा है प्लस पे, आप में से जो लोग कर रहे हैं उन्हें पता चलेगा एट द एंड ऑफ द कोर्स, अदरवाइज जब हमारा कभी क्रैश कोर्स हुआ थर्मो का तो उसमें आप देख लेना, या क्विक रिवीजन सेशंस। तो ये डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर ओनली एंड नथिंग एल्स। तो यहाँ पे के क्या होता है? पहली चीज तो यूनिट्स ऑफ के अगर आपको लिखनी है, तो यू गाइस नो दैट यूनिट्स ऑफ के विल बी units of concentration power 1 minus n times of multiply by units of time power minus 1. तो these are the units of k. एंड इससे क्या बेनिफिट है? इससे ये बेनिफिट है कि इफ यू नो द वैल्यू ऑफ के, वैल्यू पता है तो मतलब यूनिट्स भी पता ही होंगी, इफ यू नो द वैल्यू ऑफ के तो यू कैन इजीली फिगर आउट द रेट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे बोलूँ जी फॉर एनी केमिकल रिएक्शन द रेट कांस्टेंट के इज लेट्स से 9 सेंटीमीटर पावर 9 अपॉन मोल क्यूब पर मिनट, तो बताओ व्हाट विल बी द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन? तो आप बता सकते हो इजीली, है ना? तो यू कैन सी दैट हियर के यूनिट्स क्या है? सेंटीमीटर पावर 9 अपॉन मोल क्यूब पर मिनट, तो यू कैन ऑल्सो राइट इट एज सेंटीमीटर क्यूब पर मोल क्यूब, because you know concentration is what, मोल पर मीटर क्यूब, मोल पर वॉल्यूम। तो इन टर्म्स ऑफ सेंटीमीटर वॉल्यूम की यूनिट्स क्या होती है? क्यूबिक सेंटीमीटर। तो इसे सेंटीमीटर पावर 9 कैन बी रिटन लाइक दिस, सेंटीमीटर क्यूब पावर क्यूब into minute inverse. So now if you compare this, so you can check, you will get 1 minus n equal to -3, तो आपका n equal to आ गया 4, order of reaction will be 4, simple. Okay, I hope it is clear. Now here, can you guys tell me for which order of reaction rate constant K will be unitless?
For which order of reaction rate constant K will be unitless? Can you answer this? The answer is zero, none. For none of the order, none of the reaction order, K will be unitless. Why? You can check. Even if you put n equal to 0, so concentration units will exist. But if you put n equal to 1, the concentration units will vanish. But units of time will always be there. So K will never be unitless. Correct. The answer will be none. Never. It will never be unitless. Okay. आगे बढ़ते हैं. रेट कांस्टेंट में ही आपको पता है वी स्टडी थ्री थ्योरीज आरएनएस थ्योरी कोलिजन थ्योरी एंड transition state theory. So in general, you should know that rate constant K we can write as K naught, which is the pre-exponential factor or constant of proportionality, you can say, equal to T power M multiplied by e to the power minus E by RT, where M is equal. And इसे further अगर आप log की terms में लिखते हो तो you can write it as ln K2 upon K1. How we write that we have seen in the classes in the theories or we will do in quick revision session. यहाँ पे हम डायरेक्ट बस formulas की equations की बात करेंगे. इसका derivation को इतना important भी नहीं है. तो ln k2 by k1 will be equal to m times of ln t2 by t1 plus e upon r times of 1 upon t1 minus 1 upon t2. This is the equation we will get. And here you guys know k2, you are observing the effect of temperature on rate constant. So all other things will be constant. So concentration, pressure, all the things will be constant. It is normal common sense. If we are observing the effect of one parameter, so we have to keep all other parameters constant. So K2 by K1 can also be written as R2 by R1. है ना? And you know rate of reaction is rate of change of concentration or rate of change of moles. So if temperature effect you are observing, so all the things has to be constant, even like conversion and rate of change and the change in moles. है ना? So R2 upon R1, you know rate is inversely proportional to time. R2 upon R1 can also be written as ln of T1 upon T2. ठीक है? तो ये हमारा एक जनरल इक्वेशन बन गया. Where T1, T2 are the reaction time at temperature T1 or T2. R2 upon R1 are the rate of reactions at temperature T1 and T2. K2, K1, these are the rate constants at temperature T1, T2. ठीक है? तो यहाँ पे आपको पता है m इक्वल टू हो जाता है 0 फॉर आरेनियस थ्योरी. m इज इक्वल टू हो जाता है हाफ फॉर collision theory. And I hope you guys know the fact about the collision theory. Collision theory are applicable for gaseous reactions and failed for unimolecular reaction. है ना? And m equal to 1 for transition state theory. I hope you guys know this. These are the equations.
अब इस पे क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं, किस टाइप के आते हैं, वो देखते हैं। तो एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं जिससे आपको चीजें समझ में आएंगी। बट उस क्वेश्चन से पहले एक डिस्कशन है जो इस आरएनएस थ्योरी में इंपॉर्टेंट है, वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। For RNS theory, we can write K as K naught e to the power minus E by RT, where E is the activation energy. You guys know that. And I hope you guys also know that this value E upon R is also known as activation energy temperature. Okay, this term E upon R, if you see the units of this term will be Kelvin. So this is also known as activation energy temperature. So here, if you write this equation in terms of log, means to make it linear. So this equation can be written as ln k is equal to ln k naught minus E upon RT, है ना? तो यहाँ पे आप लोग चेक कर सकते हो। अगर मैं यहाँ पे एक ग्राफ बनाऊं, सपोज इफ आई ड्रॉ अ ग्राफ between ln k versus 1 upon t. So it is like y equal to mx plus c. So that graph will be something like this, where the slope of this graph, the slope is equal to minus e upon r. तो यहाँ पे थ्योरी क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, वो ये है, फॉर हाई एक्टिवेशन एनर्जी, if activation energy is high, so you can see the graph will be like what? More steeper, because the slope of vertical line is infinite and the slope of horizontal line is zero. I hope you guys know this. Slope of vertical line is infinite and slope of horizontal line is zero. I hope you guys know. So as activation energy is high for any chemical reaction, suppose, so this curve will be more steeper. And if the curve is more steeper, so you guys can see for high activation energy. If you made a small, even a very small change in temperature, see this much, very small, आपको दिख भी नहीं रहा होगा, इतना small, ठीक है? So what is the percentage change in K? See such a large value, such a large change, है ना? Very small disturbance in temperature, a very small change in deviation in temperature can cause a very rapid change, a drastic change in the value of K. So such reactions which have high activation energy are known as highly sensitive reactions. I hope you understand this. And on the same logic, if activation energy is very low, so you can understand a graph between ln k versus 1 upon t will be quite, quite horizontal. So here in that graph, you can see a very large change in temperature will be needed to make some significant change in K value. So such reactions are called relatively insensitive reactions, relatively temperature insensitive reactions. This is highly temperature sensitive. इसे correct कर लेना, ये highly temperature sensitive हो,
highly temperature sensitive reactions, and this will be relatively in temperature insensitive reaction. Okay, आई होप ये these things are clear. तो यहाँ पे एक क्वेश्चन करते हैं प्रैक्टिस के लिए, तो यू विल अंडरस्टैंड बेटर. तो सपोज मेरे पास कोई क्वेश्चन है, फॉर अ गिवन केमिकल रिएक्शन द रेशियो ऑफ rate constants at 600 Kelvin and 400 Kelvin is 600 Kelvin to 400 Kelvin is 10 from Arrhenius theory. Find out the ratio of rate constants for same chemical reaction using collision theory and transition state theory under the same reaction conditions, obviously. देखो कितना easy है, ठीक है. So you guys can think, draw a picture in your mind. I'm giving you 20 seconds and then we will start the discussion. अच्छा, टाइम हो गया है आज का. ये सब कहाँ से आया? देखो मैं आपको यहाँ चीजें क्लियर कर देता हूँ. From Arrhenius theory, it is given that K2 upon K1 is equal to 10 at T2 equal to 600 Kelvin and T1 equal to 400 Kelvin. ठीक है. अब आप बोलोगे सर इसे T1 को 600, T2 को 600, T1 को 400 क्यों लिया? अरे बाबा, you guys already know the RNA, all these theories. ये सब तो पता है ना आप लोगों को. As temperature increases, rate constant K increases. है ना? You know that. So ratio is greater than 1. So obviously T2 means will be the higher temperature, that is 600 Kelvin. So from Arrhenius theory. So Arrhenius theory से equation क्या है? You know that from Arrhenius theory equation is ln K2 by K1, which is equal to 10 E by R times of 1 upon T1, which is 400 minus 1 upon T2, that is 600. तो ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई. अब कोलिजन थ्योरी लगा दो आप. कोलिजन थ्योरी से आप यू नो दैट इक्वेशन इज लाइक ln K2 by K1 is equal to 1 upon 2 times of ln T2 by T1, which is 600 upon 400, plus E upon R 1 upon T1, that is 400, minus T2, which is 600. तो ये है. और similarly from transition state theory, you know that the equation is ln K2 by K1. It will not be half, it is simply ln 600 upon 400 plus E by R 1 upon T1 minus T2. करेक्ट. ये हमारा केस है. तो यहाँ से सॉल्व करना है तो कर सकते हैं आराम से.
कोलिजन थ्योरी में देख लो आप। 600/400 है प्लस this value. You know this value is what? What is this value? You can see this value is equal to ln 10 from RNA's theory. And here you know on right hand side, this can be written as ln of 6/4 power 1/2 multiply by 10. Now if you take anti-log, so you will get K2/K1 is equal to 10 multiply by 6/4 power 1/2. So what is the value? You can check. 12.247. Okay. In the same way, you can check for transition state theory. Ln K2 by K1 is equal to ln of 600/400 plus E by R equal to this. And you know this value is equal to what? Ln 10. So you can see K2 by K1 will be equal to 6/4 multiplied by 10. That is 15. So this is the answer. See how easy it is. है ना? So that's how you can solve the things. ठीक है? तो next class में we will start our discussion on reaction kinetics for CVRS as well as VVRS. And we will do some very, very interesting questions, including some PYQs. Okay. वैसे PYQs नहीं करेंगे, खुद से ही करेंगे। PYQs में तो बहुत ही बच्चों वाले क्वेश्चन आते हैं आपके काइनेटिक्स से। थोड़े अच्छे क्वेश्चन करेंगे, आपको मजा आएगा करने में कि हाँ कुछ तो किया हमने जीवन में। ओके, तो एनी डाउट गाइस हियर? सो दैट्स ऑल फॉर द डे गाइस। थैंक यू सो मच। बाकी जाने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज बताना चाहूंगा। ठीक है, जस्ट वांट टू इन्फॉर्म यू वन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टफ अबाउट द Unacademy program offers and all. So these are the learners which who got the All India rank 1 last year in our Unacademy in various stream. You can see this was from chemical engineering. Okay. So there is one offer going on in which you can get 50% off on the gate subscription plus 1 month extension. ठीक है, in 5999 only. आपको क्या करना है, लिंक इज गिवन इन द वीडियो इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द वीडियो, यू कैन चेक आउट देयर और यू कैन गो ऑन द अनअकैडमी वेबसाइट, जस्ट सेलेक्ट द डोमेन, और अदरवाइज डायरेक्टली आप वीडियो में जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहां से जा सकते हो। आपको इफ यू आर इंटरेस्टेड टू डू द क्रैश कोर्स और समथिंग और द प्रिपरेशन ओनली फॉर द नेक्स्ट 3 months और 4 months, ठीक है, तो दिस इज फॉर यू। आपको वहां जाके क्या करना है, जस्ट यू नीड टू यूज code ACE009, ACE009, that is my code, and you will get the 50% off on the subscription, and plus 1 month subscription extra free मिलेगा। ठीक है, you can see in 5999 3+1 4 months के लिए। ठीक है, मैंने I told you if you just want to prepare for till gate exam only, the crash course and all, which was started on 28 September only on our platform। ठीक है, बाकी सब्जेक्ट्स का भी चलेगा। अभी हमारे पुनिया सर का कोर्स चल रहा है, नवंबर से मेरा और अंकुर सर का क्रैश कोर्स स्टार्ट भी हो जाएगा। So that's how we will be cover up all the subjects for you people. Okay, so these are the things. So see you guys on board.
फीचर्स आप लोगों को पता है। और इस कोर्स में आपको ऐसा नहीं है क्रैश कोर्स, इसमें आप नॉर्मल जो हमारी वीडियोस हैं, प्रीवियस लेक्चर्स हैं, उन्हें भी आप एक्सेस कर सकते हो। क्लास के हैंडआउट्स आपको डायरेक्ट मिलेंगे। आप क्लास में रेज योर हैंड के थ्रू डायरेक्ट अपना वॉइस के थ्रू भी क्वेश्चंस पूछ सकते हो, डाउट्स पूछ सकते हो। एंड जो लाइव सेशन है वो भी मिलेंगे। तो क्रैश कोर्स का सब्सक्रिप्शन जरूर है, बट ऑल द फीचर्स आर सेम एज द नॉर्मल सब्सक्रिप्शन जो रेगुलर सब्सक्राइबर्स हैं उनको मिलते हैं। ठीक है। तो प्लस एंड आइकॉनिक दो ऑप्शन आर देयर। आइकॉनिक में आपको एक मेंटोर भी मिलता है जिससे आप डायरेक्ट अपने डाउट्स पूछ सकते हो किसी भी टाइम शेड्यूल करके। ठीक है। तो सी यू गाइस। और हमारा स्कॉलरशिप टेस्ट है ही स्केड्यूल्ड 20 अक्टूबर के लिए। आप उसे भी एनरोल कर सकते हो। उसमें सिर्फ आपको अटेम्प्ट करने पर ही 50% डिस्काउंट मिल जाएगा। एंड इफ यू आर एबल टू गेट गुड रैंक, ठीक है, तो यू विल गेट अप टू 90% स्कॉलरशिप फॉर गेट 25 एंड अप टू 100% स्कॉलरशिप फॉर गेट 2026। उसका वीडियो भी आपको मिल जाएगा अनअकैडमी के चैनल पर ही, वो आप देख सकते हो। मैंने उसके ऊपर एक प्रॉपर वीडियो भी बनाया, द गेट 2026 strategies for beginners. Okay, so that's all for the day, guys. See you in the next session. Till then, bye bye, take care, tada, have a great day ahead. Sayonara. And please do make sure to like the videos and share your feedbacks in the comment section. ठीक है, in the comment box of the videos कि how you these sessions are helping you. तो इससे हमें काफी हेल्प मिलती है। एंड इफ यू हैव एनी अदर फीडबैक और एनी डाउट और एनी सजेशन कि सीआरई के बाद हमें सर किसके फार्मूला सीरीज स्टार्ट करनी है, तो वो भी हम कर सकते हैं। तो जस्ट मेंशन दैट इन द डाउट्स कमेंट सेक्शन।